Samir. So one fight which we shot in Bombay was choreographed by Samir, but in the ones we did in Malaysia was between me and Irfan and the other fighters. They also used to come up with great suggestions. Um, we didn't want to make it look like, you know, कि fight की acting चल रही है. It's an emotional story, so every punch, every kick has a emotional connotation. It's a sense of getting to your goal, which is to you know, make your beautiful co-star fall in love with you more. मेरा सवाल है दीपक तिजोरी से, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन. दीपक जी, किसी फिल्म को रीमेक बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम क्या होता है आपकी नज़र में? सर कहाँ हो भाई? इधर आपके राइट में. हाँ ओके सॉरी. हाँ क्या बोल रहे हैं सर? मतलब रीमेक फिल्म को बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम क्या था आपके लिए? आई थिंक जब भी रीमेक बनाते हैं तो एक ज़्यादा बोझ रहता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो हूबहू कॉपी नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली वो हम लोग उससे इंस्पायर होते हैं, हम उसको अडेप्ट करते हैं. और ऑब्वियसली वो जो फिल्में हम लोग जहाँ से इंस्पायर होते हैं वो डुप्लिकेट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उसके इमोशंस और हमारे इंडियन इमोशंस में फ़र्क रहता ही है, नो मैटर व्हाट. So I think obviously we had to do a lot of work with regards to changing a lot of things in this movie. तो जब आप ओरिजिनल देखें और अगर आप ये देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा. बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चेंज करनी पड़ती है. We really can't just adapt the way it is. So there was a lot of hard work with Girish ji. I think a lot of credit goes to Girish ji because इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने डाली which were creating such lovely emotions between the couple, and the dialogues are really really good. So I think it is kind of cut away from the original film, absolutely, but it is a lovely adaptation. I'm sure you all will like it. Hi Deepak, straight. Hi. You know, Bollywood got exposed to mixed martial arts with Brothers that released last year, and even this film is based, like, has a mixed martial arts in its backdrop. So how easy or difficult was it for you to direct the mixed fight sequences, because we have seen a certain kind of fight in that film? Yeah, I think, you know, we were all worried. Actually, me and Randeep were, in fact, when the trailers were coming out, we were a little paranoid. So we did go and see Brothers, and I was, after seeing Brothers, I was really relaxed and very easy. And not at all worried, because we both were kind of chilling about it, that it's entirely a different ball game, the way they've gone about it and the way we've gone about it. So I guess let's see it in the film and then talk about it. And another question to Mr. Jayantilal Gada. So what kind of release are you planning for this film in India? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सुनील वाधवा. उन्होंने मिनिमम 800 स्क्रीन प्लान करी है. Which is a lot for a movie of this nature, yeah. Thank you, sir. और अच्छी बात यह है कि दो वैसे कंपटीशन थी, दो फिल्में ऑटोमेटिकली, शायद हमारी किस्मत अच्छी है कि डिले हो गए. कहीं वो डर तो नहीं गए? नहीं धवल, वो धवल से डरे थे एक्चुअली. धवल से डर गए. हमारी किस्मत अच्छी थी. धवल, हाँ, धवल से बहुत डरते हैं. ऑल्सो ब्रदर्स में क्या हुआ था, ब्रदर्स में ना वो फाइटिंग के बारे में पिक्चर बन गई थी. हमारी पिक्चर फाइटिंग के बारे में नहीं है. हमारी पिक्चर एक लव स्टोरी है. जैसे कि हर एक छोटे शहर में लगा लो या हर एक शहर में एक यंग एज पे कोई भी लड़का सोचता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ या मुझे कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग आती हो ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को बचा सकूँ, कोई छेड़ दे तो मैं मुंह तोड़ दूँ. एक ऐसी एक फैंटेसी होती है सब में जब शुरू में सब लोग जिम विम जाना शुरू करते हैं. ऐसे ही लड़कियों में होती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा जो आदमी है वो इतना स्ट्रांग हो कि मुझे कहीं भी प्रोटेक्ट कर सके और मेरे लिए जान निछावर कर दे. तो मेरे ख्याल से वो दोनों सेक्सेस की यंग की जो फैंटेसी होती है वो इस फिल्म में ठोक ठोक के भरी हुई है. सो आई थिंक वी आर सेफ फ्रॉम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर. नहीं, जाट वाला मामला, कोई टेंशन नहीं. हाय काजल. चलता है. Hi, here. Sorry, I can. Yeah. Hey. Yeah, hi. So we all know about the kissing scene and the story behind it. We all know about it, but I just want to know it from you that what exactly it took to go for it, like since it was not there in the script earlier. You mean apart from having to kiss me? But still, I'm sure there must be something for you to elaborate on it. No, it was a part of the film, and it was a very essential part of the film. Of course, earlier I had reservations and hesitations about it.
But of course, after I understood the relevance of it in the script and I understood how important it is to the story, I agreed to it. I mean, this was a very professional thing, and it's not like the two of us got carried away or any such jazz. That's not even possible. And we professionally did our job, and that's about it. I mean, what more can I say about it? Randeep. It's a very sensitive thing in the story. I mean, it's meant for a very sensitive, emotional reason. This girl cannot see. So, of course, the only way that she can express her love to her man is by wanting some sort of physical contact. The only way she knows him is by touch. So you will obviously understand the importance of the kiss once you understand the sensitivity of the story. But she did panic after she saw Jism too. Yes. Very much. Oh my God. हाय रणदीप, hi. आलोक है आपके लेफ्ट हाय आलोक, हाय। मेरा सवाल है कि पहले तो सरबजीत के लिए बधाई, बहुत सारी सराहना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जब आप वजन कम करते हैं सरबजीत के किरदार के लिए, फिर यहाँ पे वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, इसके लिए काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ों को करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सिस्टर जो कि इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं और जो पोस्ट बायोट्रिक केयर और हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की सो करती है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं चाहूँगा कि कोई इसको घर पे ट्राई नहीं करे। 1 साल में 30 किलो मसल मास घटाना बढ़ाना ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं हूँ अभी भी, तो मैं चाहूँगा कि कोई घर पे ट्राई ना करे। पर जब मैं 2 लफ्ज़ों की कहानी कर रहा था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को वो इतनी सॉलिड बॉडी बनाई अन्ना के साथ मैंने, इतना मतलब जाट आदमी, मतलब आई यूज्ड टू वॉक लाइक कि मैं दरवाजे में से निकल जाऊंगा, खोलने की जरूरत नहीं है। एंड टू lose that for Sarabjit, it was very heartbreaking. It was a very heartbreaking decision that I took. Every day when I was losing that muscle, I used to look at myself in the mirror and say ki shit yaar. So it was very hard, but I think जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स बॉडी बना के 6 पैक बना के बहुत लोगों के जहन में आ जाते हैं, मेरे को थोड़ी अपनी हड्डियां निकालनी पड़ी जहन में आने के लिए। तो हर एक का अपना अपना कुछ होता है, तो बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट एंड होपफुली विद अन्नाज हेल्प आई विल बिल्ड इट अगेन। अच्छा रणदीप, काजल आपने दिव्यांग लड़की का किरदार निभाया है इस फिल्म में। जी। आप ऐसे लोगों से मिली भी होंगी खास तौर हाँ से। जी, बिल्कुल। तो उनके क्या सपने होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, अगर आपकी उनसे बात हुई हो कभी? और जी, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। हम गए थे XRCVC, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट जेवियर्स, एंड दीपक, मी एंड सुधीर, we went to XRCVC. We spent a lot of time there. We met Dr. Sam, who's the head of the institute, and we interacted with them. उनसे बहुत बातचीत हुई, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हमने वो गैजेट्स एक्चुअली इनकॉर्पोरेट किए हैं फिल्म में, एंड देयर वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक दैट वी सॉ where if they want to pour water into, say, a glass, usually we just pick up the bottle and pour water and serve it. They'll put their finger in the glass so that the water does not overspill. Now, this is a very basic common sense thing, but it's just that we never think of it because we don't really feel the need to do it. So we've incorporated that in the film as well. And I'm really glad that Deepak was there to actually see all this and interact with them along with me, because we both understood the relevance of these things and we wanted to keep it as real as possible. And of course, जब मैंने इन सब से interact किया, बहुत ही बच्चों से मिली, there was this one special lady assigned to me named Calvina, who taught me assisted walking techniques and who taught me a couple of things. I realized that they are actually way happier than us. You know? They are very positive, radiant, happy people. And usually हमारी हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक तो वो बहुत ही दुखी हों, या पूरी दुनिया से नाराज़ हों क्योंकि they can't see, या फिर इतने गुस्से में हों. There's nothing like that. They are very calm, happy people who go about their lives beautifully. So that's what I actually got to learn, and I was very touched as a person, you know, more than just doing the film. I was very touched by this whole thing. रणदीप, अगर डायरेक्टर आपका खुद एक्टर हो तो ये बेनिफिशियल होता है या इसमें कुछ गड़बड़ भी होती है वाइल शूटिंग? नहीं, बेहतर होता है। उसे पता है कि एक्टरों पे क्या बीतती है। ऐसे नहीं है बैठ के ऑर्डर ही देते रहो, उन्हें पता है भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने खुद कैमरा फेस किया है। आई हैव ऑलवेज लाइक दीपक एज एन एक्टर एज वेल, एंड इट्स ऑलवेज एन एडवांटेज आई थिंक। एंड द डिसएडवांटेज इज व्हेन द डायरेक्टर्स हैव नॉट बीन एक्टर्स एंड आर वांना बी एक्टर्स। अरे बाप रे, वो सबसे बड़ा कष्ट वाला। हाँ, वो बहुत कष्ट वाली बात होती है जब जिनको खुद एक्टिंग उन्होंने की नहीं होती पर उनके अंदर एक एक्टर होता है, तो वो तुम्हें जो सेट पे कर करके दिखाते हैं, भाई मैं कह देख तू ही कर लेना,
So that was not the case here. और दूसरा प्रोड्यूसर जब राइटर होता है, हाँ वो अरे बाप रे, प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर आजकल क्या है ना, कोई कुछ भी कर लेता है, गाने भी गा लेते हैं लोग with help of self tuning or something. Hi Randeep, it's Soumya Verma from Zing. So as you said, it's your first bona fide love story. So who was your inspiration behind this whole role, and who do you used to look up to as a romantic actor or something like that? Me? Yeah. Why would I want to look at somebody else and do Maybe their earlier thing? days of your career or something like that. No. Well, there's a phase of my career before Once Upon a Time and there's after Once Upon a Time. So Once Upon a Time के पहले मैंने attempt किया था वो सब, पर किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं, मैं भी बात नहीं करता हूँ, ठीक है? But उसके बाद से पहला वो है. And no, I think you have to find it all within you. I mean, you cannot be emulating people. There are actors who are very good at emulating. I'm not very good at mimicry or emulating anything. I'm very bad actually. Hi Deepak. So Sorry. Go on. Hi Deepak, Karmik Verma here from ikarmik.com. My question to you is that you have a love affair with remakes. I think one of the first films was a remake of Identity. That was not the first film. One of the first one films. One of the earlier films. Yeah, one of the yeah. Sorry, I don't know which one was your first No, film, but no issues. and now this one. So tell me a little about that. Is that an inspiration that you always look out for, and what's going to be your next remake? I'll tell you how it works is the school that I come from is very simple and it's a very straight film where we learn. I learned from my mentor, that is Mahesh Bhatt. He has only one thing to say to us. Whenever we used to sit and admire and sit and listen to how he used to make films, how everything that we were growing with, when we were actors, we used to hang around, and there were a lot of huge writers like Robinda and Sujita and Akash Khurana, and the gang was always writing for Bhatt Sahab. And we used to be actors who would be loitering around the sets in their sitting rooms and stuff like that. Every time that Bhatt Sahab mentioned, it always got stuck in my head. So every time a writer comes with a new concept, he says, let's not waste fucking time, okay? There are millions of dollars which have been spent by people who have made films in different languages. Just adapt them. Do not waste time. That's so Bhatt Sahab. Do not waste time. So it's very simple, for me to follow that, okay, every story, eventually what it comes to is that whether we look into it as a film, it being adapted, but any story that anybody is making today, all over the world, there has to be a germ somewhere where he is inspired from. So how does it make it, why is it so difficult for people to digest if we are just making another film and getting inspired from them? If you have a love story and you are my friend, if you tell me a love story, I get inspired, I'll make a film tomorrow, right? So is it a problem? That's not a problem. Then why this is a problem? So I guess everybody should accept, in fact, even biggest of the biggest directors today, we have Ansali, who has been inspired and who has made number of films back to back, which has been adapted. So I guess it is a very easy and a very simple pattern, which I think what Bhatt Sahab has taught me. And if it is so, then it be so. Do you have another inspiration in the near future? For Your next love movie? story. Not my love story. Yes, I mean, of course, I'll be making more films after this because I'm almost after half an exile of 7 years, I'm coming back, and thanks to the whole team here that I'm coming back. But yes, I'm definitely going to make more movies, and we are looking at making films which are going to be entertaining. Randeep, the next question is to you. I'll tell you about the story part of it. There are only 4 kinds of stories possible. Love story between 2 people, love story between 3 people, revenge, and a journey. All these come within these 4 generic genres. All stories. My question to you is that, you are one of the most versatile actors because you've chosen characters and roles that are very unique from I did not have good career guidance, that's why. No, but then thank God for not having that then. Thank you. But my question is, see, you've done Sarabjit, you've done Lal Rang, then Sultan is coming. तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? ऐसे romantic roles करने में आता है आपको या फिर the serious kinds that you've been doing? Let me assure you, in this movie, I'm not doing a comic take in दो लफ्ज़ों की कहानी. It was in Lal Rang. So Lal Rang was for me a very entertaining film to shoot. It took me back to my roots after so many years. I spoke my own ethnic language for a change.
I played a character which was very close to me for a change when I was in college. So that movie obviously holds a lot of personal attachment for me. But then my fantasy of watching Bruce Lee and Gone with the Wind as a child have come true in Do Lafzon Ki Kahani, where I am playing a bit of a Bruce Lee and I'm playing that romantic hero as well. Yes, ma'am. आप उस तरफ जी. Hi Kajal, yeah. Hi. Hi, I'm Monica from Bollywood Nazar. जैसे कि हम जानते हैं कुछ दिनों में आपका birthday है. So any birthday plans or what do you have decided? You know, that's actually very nostalgic because last year we were in Malaysia celebrating my birthday, the entire team, and I had a great, great birthday. So now it's going to be hard to keep up to the benchmark, considering the amount of fun we had. But as of now, no plans. Since the picture would have released by then, I don't think we are invited. Okay, so कहाँ celebrate करोगे? वहाँ South में और with Bollywood friends? आपको बुला रहे हैं. आपको बुला रहे I'm हैं. not too sure. Honestly, I don't have any plans as of now. She gets younger every year. She gets younger by 2 years. That is true. Thank you guys. एक last Hi, question. Randeep. हाँ. Randeep here. Yeah. Randeep, you made your debut in 2001, and then after nearly a struggle of 4 years, you bagged your second film. This year you It have... was not a struggle. I was employed by Mr. Ram Gopal Verma in his factory. I used to get Yeah. 35,000 rupees a month not to do any film. Okay. Because he was going to launch me in a In big film, D. which he did eventually D, yeah. in D. Yeah. Yeah. This year you have 4 releases in 4 months. Do you think Bollywood is really shining upon you, or you still have to struggle to get the perfect roles? See, I don't have a line of producers standing outside my door with bags of money. I don't think anybody has, but you can create a perception that you do. But I choose the best of what I get, and once I choose to do it, that's when I make it mine. So that is why maybe you're thinking. But having 4 releases in 4 months is very tiring. I have to face you people every month. And it is not very, although you guys are all very pleasant, but it's a very hard task to say those things over and over again. But apart from that, I think those 4 films, I can only look at it positively. That these 4 films coming back to back would probably be able to highlight in a general perception the kind of different genres and different roles that I have been attempting. Last question. मेरा सवाल दीपक सर से है. हाँ. सर, दीपक सर. Yeah. सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप बहुत आपने अपने करियर में बहुत सारे आपने सपोर्टिंग रोल किए हैं. 90 से आप हैं. हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक दौर था जब जैसा स्टार होता था वैसे रोल बन जाते थे. आज का दौर ऐसा है जैसा कैरेक्टर होता है वैसा स्टार बन जाता है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस रेवोल्यूशन को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे पास रणदीप हुड्डा है. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? Name 2 others. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान. तो इस रेवोल्यूशन को आप किस तरह देखते हैं? आजकल बड़े स्टार्स भी आज इस जो क्या बोलते हैं इसको एग्जाम्पल को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं. तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? नहीं, मैं समझता हूँ सिनेमा हैज़ चेंज्ड फॉर गुड. और ऑब्वियसली उस टाइम पे हम लोग मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ही लाचार थे, हम लोग हेल्पलेस थे. वी वर ऑलमोस्ट लाइक हम लोग अपंग थे. हम लोग कुछ सर्टन दायरे के बाहर जा नहीं सकते थे. और आज ये माहौल है कि इफ़ द कंटेंट इज़ डिफरेंट, इफ द कंटेंट इज़ गुड, then you don't have to have those typically 6-pack and you can just be a hero of a certain content driven film. Doesn't matter what you look like. So I guess today content being the king and the kind of different cinema which is coming up, which is absolutely amazing. It's the best time, I think, all for the actors, for the makers, for everybody. Thank you guys. बहुत बहुत शुक्रिया. Last. Okay. रणदीप, जिस तरह से आप बैक टू बैक फिल्में करें, हम माने कि एक दिन अक्षय कुमार को आप पीछे छोड़ देंगे बिकॉज लाल रंग, बैक टू बैक आप फिल्में करें, सुल्तान, लाल रंग, 2 लफ्जों की कहानी. अक्षय कुमार जी को मेरे से कुछ 400 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं और तो कोई फर्क नहीं है. आप अपनी डिमांड नहीं करते उस तरह की 400 गुना ज़्यादा पैसे? करा था, 400 लोग गायब हो गए. हाँ, वो 400 लोग गायब हो गए. और देखिए, I think Akshay is one actor who's really evolved with every film. I think he's the most evolving actor, from his action image he went into comedy and now he's doing both and he's choosing very contentful films. So I'm very, very glad that you're comparing me with him, even if it is just by the number of releases. But I look up to him. He's an actor who's always looking for growth.
दीपक जी एंड रणदीप, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि 10th ऑफ जून को अमित जी की भी फिल्म आ रही है 3, तो कुछ डर लगता है आपको फिल्म की रिलीज करने से? दीपक जी पहले आपसे जानना ये चाहेंगे। लास्ट वाले सवाल वाले वही होते हैं, चिल्लड़ जो बीच में बैठ रहे थे ना, अभी 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 उंगली करते हैं इनको। दीपक जी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो फिल्म ऑब्वियसली इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, उसमें बड़े बड़े महारथी हैं एंड वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट एंड लव ऑल ऑफ देम एंड आई थिंक देयर इज इनफ स्क्रीन पेस, तो इसमें कंपटीशन की बात नहीं है। दे आर आल्सो हैविंग इनफ स्क्रीन्स, वी आल्सो हैविंग इनफ स्क्रीन्स, सो देयर इज नो सच कंपटीशन बिटवीन अस। इसमें मैं बोलना चाहूँगा, ये 2 फिल्मों की नहीं बात है, 4 फिल्में थी इस दिन पे। 2 पहले ही मैंने बताया कि 2 पीछे हो गई, तो किसी भी बात का डर नहीं था, बिल्कुल भी डर नहीं है। रणदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ में 3 फिल्म रिलीज हो रही है। All the best to them. All the best to them. They're very different films and they'll find their different audience. ओके दीपक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जयंतीलाल जी ने कहा कि ये फिल्म जो है भट्ट साहब के फिल्मों की याद दिलाएगी, और अभी आपने लव स्टोरी की बात की, तो हम ऐसा माने कि एक दिन आने वाले दिनों में आप 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी फिल्में बनाएंगे? मेरी और दीपक की बात चल रही है। यस यस। हाँ। और उसमें हीरोइन की भूमिका शायद रणदीप बता दो। नहीं बताना। नहीं सरप्राइज है वो। सरप्राइज है। एक्चुअली वी आर मेकिंग 61 shades. यस। 50 is not enough. यस। और शेड्स में हीरोइनें रहेंगी। दीपक जी, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, अगर आप कुछ कहना चाहते इन्होंने दिया। दीपक सर बोलिए सर। सर सही कहा सर, इन्होंने ऑलरेडी हमारा सब चल रहा है प्लानिंग 61 शेड्स का। जी, इस टाइटल की एक कहानी है अलग। इस टाइटल को मुझे मतलब इतने लोगों ने हिलाया है इस टाइटल को लेकर कि ये टाइटल चेंज होना चाहिए। उसमें से हम भी एक हैं। मैं बहुत ही नालायक आदमी हूँ। मैं इस बात से नहीं हिला कि यही टाइटल होगा, तो बस मैंने यही रखा। एंड हो गया भाई लोग। थैंक यू भाई लोग। लेकिन जाते जाते मैं को प्रोड्यूसर साहब के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। विकास के लिए, सिद्धांता अशधीर के लिए, अक्षय, जयंतीलाल गड़ा, कुशल, कांतिलाल गड़ा एंड रेशमा जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिल्म आ रही है 10 तारीख को। मोस्ट वेलकम, आप लोग जरूर ये फिल्म देखिए। थैंक यू। सबका ओहो
यो यो ए स्टिल बैठो और किसी को कुछ लेना है तो ले लो भाई। सलीम किधर है?